Very good morning, friends. Hope you are having a very sunny morning working day. Wish you a healthy, safe life. So today we are going to demonstrate another very beautiful classical case of Ilizarov in primary trauma. Here you can see this is a classical volar Barton fracture. We applied slab, but as we know that the slab is not a treatment, is not a typical Kulis, will go in deformity. So ideal in all these cases, we always do a volar plating, a T plating. We always do a T plating. So we always do a T plating, that is a regular. We have done lots of T plating for a good moment, but in our T plating you have to give a large incision from here to here, and it takes time in healing, but that is classical. Apart from the stream going counter current, we are doing totally bloodless surgery Ilizarov in this case. I'll show you how. The basic first principle is to reduce and fix the fracture. Here we passed a play olive wire. You can see before reduction. As the wire goes in, you can see that it is getting compressed, and here you can see a very good compression in this case, and the articular margin is well maintained. That's the main percent. First we are doing the reduction of fracture, then we'll do maintenance and ligamentastasis. To maintain this, we can pass another plain wire. You can see after a ring and two cross K wires, one ulnar to radius and one compression for leaf. You can see a very good arc. Radial ulnar arc is maintained here. See how good the arc is maintained. You can see perpendicular olive wire. Very good reduction. You can see this is the final reduction in this case. The olive is doing a very good compression, and the radial ulnar wire is maintaining the arc. So complete bloodless. So this is the final construct. This is the main ring. This is the main ring here. This is the main ring here. You can see this is a full ring. There is a radio ulnar wire. This is the radio ulnar wire from medial to lateral. That is a plain wire. And here this is the olive wire with just a small nick. We are going to olive wire here, which is given the compression. To stabilize, there is another full ring. Two cross K wires, plain cross K wires. So this is the compression ring, this is the stabilization ring, and this is the distraction ring. Normally if you give a monolateral distractor, it doesn't give a complete distraction. So we have just one half ring over here, you can see, and one plain wire. This goes to all the metatarsal necks, and after this we can have complete range of motion. Full movement is allowed here. So patient can do all the activities of daily life from next day onwards. He cannot have a shower also in this case. So we have given vertical hinges here, so it can give full range of motion. You can see full range of motion is there. We'll add the motion next day. So in this case, this is a complete bloodless surgery. Ilizarov in primary trauma. Just 2.5 rings and 5 wires and a few hinges. So there is no restriction, there is no plaster. Patient can do all his work. Patient can write with these two fingers. Ungli chalaiye. Patient is in block, and you can see there's partial movement. Ungli chalaiye. So movement is also there. So we just do in block, so there is no enough neuropraxia. You can also see there is quite an ecchymosis over here. So this is not an ideal case of plating. There is swelling also. We have to ideally wait for a few days for swelling, but this is the second day. We can always do surgery in these cases. Ilizarov is a very good and very safe method in these cases. Thank you. So today we have Dr. Sikandar. He's a resident, just passed MS Ortho from DMC Darbhanga. He has come here to learn Ilizarov here in these cases. Dr. Sikandar, अब बताएं आपका एक्सपीरियंस इस केस में कैसा रहा? सर अच्छा रहा इस बार कि मतलब ओपन नहीं करना पड़ा, और मिनिमली इन्वेजिव करने के बाद रिडक्शन हमें परफेक्ट मिला है, और पेशेंट के लिए तो ज़्यादा बेहतर है ये स्कार मार्क भी नहीं दिखेगा, और हमारे लिए भी सुविधाजनक हुआ। नॉर्मली इस तरह के केसेस में आप क्या करते आए हैं, क्या देखते हैं? नॉर्मली तो इसमें सर ओपन करके बटरस प्लेट किए थे। फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं इलिजारोव इस पे। बटरस प्लेट में और इसमें क्या फायदा है? बटरस प्लेट में आपको लंबा सा इंसिजन देना पड़ता है, स्कार मार्क ज़्यादा होता है, हीलिंग में टाइम लगता है, हीलिंग टाइम ज़्यादा लेता है सर, सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा भी ज़्यादा होता है। इसमें कम से मिनिमली मतलब ट्रॉमा हुआ, कभी कभी प्लास्टर भी लगाना पड़ता है। इसमें जो है सबसे अच्छी बात है कि पेरियोस्टियम इंटैक्ट है, इसलिए हीलिंग इसकी बहुत ही फास्ट है।
आपसे दोस्त आप पूछेंगे, निकालिए पूरा निकालिए, मस्त निकालिए आराम से। इधर देखिए, फिर से बोलिएगा, अपना नाम बताइए। शैलेश कुमार है। कहाँ रहते हैं? पटना कंकड़बाग में। कैसे चोट लगा था आपको? बाइक से मतलब एक्सीडेंट कर गए थे, कलाई में कलाई टूट गया था और जबड़े में भी थोड़ा चोट आया है। जबड़े में चोट। उसके बाद आपको प्लास्टर लगाया गया था। हाँ। प्लास्टर में हड्डी बैठाई कि आपकी हड्डी बैठ पाई थी? नहीं, पूरी नहीं बैठ पाई थी। उसमें आपको बताया गया कि इसमें चूँकि ये जो फ्रैक्चर टिपिकल है, इसमें हड्डी टेढ़ी होगी, जरूरत यहाँ टेढ़ा भी हो सकता है। हाँ सर। आप इस ऑपरेशन के लिए कब एडमिट हुए? आज सवेरे ही एडमिट हुआ। आज सुबह आप एडमिट हुए और अभी आपकी ऑपरेशन हो गई और कल आपका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। हाँ सर, हमको ऑपरेशन में कुछ नहीं बुझाया। कोई दर्द कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, कोई आपको दर्द बिल्कुल यहाँ सामने ब्लॉक देके किया, पेशेंट होस्ट में बात कर रहे हैं। हमको तो बुझाएगा, हम सोए हुए। इनका हाथ देख सकते हैं और अपना हल्का हल्का उंगली चला भी पा रहे हैं, हल्का उंगली चलाइएगा। तो ब्रैकियल का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, जो उंगली चल रहा है। तो आपको ये दिस इज कंप्लीट पेनलेस सर्जरी, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं हुई है। नहीं, कोई दिक्कत और आप देख सकते हैं कि आपको खुद देख सकते हैं कि आपका ये जो है कोई इसमें चीरा नहीं पड़ा है, ठीक है ना, बिल्कुल ब्लडलेस सर्जरी है, ठीक है। और कोई दिक्कत आपको